वालेकुम दोस्तों। आज मैं यहाँ पे रिलायबिलिटी चेक करूँगा क्वेश्चनेयर की, और मैंने डेटा यहाँ पे पुट की हुई है पूरी कंप्लीट। आप 100 सैंपल ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेरी पूरी डेटा है, तो इस वजह से मैं सबको ऐड करूँगा। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर दिए गए हैं, ये जैसे कि एज है, क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये सारे जो भी हैं ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। इनकी हमें चेक नहीं करनी, हमें चेक करनी है। देखें यहाँ पे है स्केल वाइज जो भी वेरिएबल्स हैं, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ है, सैलरीज़ है, इस हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will go to the analyze. See here, you can see the analyze. Later we can go into the scale, right? After the scale we can click on the reliability analysis here. Now everything is alright, and I will reset it. You can reset it again and again. So I will select my only particular variables. For example, whatever you have, you can select. I have to select only 3 or 4. Just like I selected, I have sufficient opportunities, so I will put this in the right box here, this like this, and another I will put this in the right box, and the third I'll put it here. Now I will check the Cronbach alpha of these all threes. So I will go into the statistics, items, and now everything was all right. And if you want to select any other thing, correlation, covariation, variance, so you can select. I don't want it. Okay, I am selecting it here, covariances and correlations, not covariance. Okay, continue, and I will go for the result by clicking OK here. Now the results are here. You can see that we have all the items here, 343 number and 100% data. So the reliability statistics here, you can see that my cursor is rounding on the reliability statistics. So you can see here the Cronbach alpha's value. Now it is 0.469. Now this is not okay, because we need the value above 0.5, which is okay. If we have 0.6, then it is better. If we have 0.7, then that is good, very good. 0.8, excellent. So our scale will be excellent at the 0.8 value of Cronbach alpha. Cronbach's alpha यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आया हुआ है 0.469। तो ऐसे ही आप सारे जो भी आपके कंस्ट्रक्ट होंगे, जो कि वेरिएबल हम कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस को मिलाकर एक कंस्ट्रक्ट बनता है, उनका आप एक एक करके ये Cronbach अल्फ़ा वैल्यू चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चनेयर की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। तो दूसरे का हम देखते हैं। तो ओवरऑल ये वैल्यू आई थी 0.469, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये रिलायबिलिटी इसकी सही नहीं है क्वेश्चनेयर की। मुझे और वैल्यू ऐड करनी होंगी, और मुझे अपने जो आइटम्स है उनको चेंज करना होगा, या फिर दूसरे आइटम्स लेने होंगे, ठीक है, या फिर मेरी डेटा में कोई इशू है। ओके गाइस, थैंक यू. I will make another video on SPSS. So see you later.